Hello everyone. Welcome to my channel Linguistics and Literature with Dr. Imran. In this lecture, we'll discuss Aristotle's concept of a tragic hero. So we will discuss in detail the characteristics of a tragic hero given by Aristotle. Let's begin and learn. So according to Aristotle, tragedy is about the fall of hero to arouse pity and fear, so that we can have a catharsis of these emotions. This catharsis or purgation is possible only if the tragic hero has some certain features. First of all, look at the first line. What is tragedy? Is the fall of a man, right? So a man, particularly a prince or a king, falls from a very prosperous condition. Once he was a king or he was enjoying a very prosperous life, and now he is destroyed. So that is the fall of a hero, to arouse pity and fear. So why the hero falls? In order to arouse pity and fear. So these are the two basic emotions, so that we can have a catharsis of these emotions, because everybody has pity and fear in mind. We have lock up these pity and fear, these emotions. And these emotions are released when we watch a tragedy. And in a tragedy, when we watch the fall of a hero. Excuse me. So this catharsis or purgation is possible only. So the catharsis or purgation of the to release these emotions, pity and fear, are possible only if a tragic hero has certain features. And if a tragic hero does not have these features, so then there'll be no pity, there'll be no fear. And if there's no pity and no fear for the fall of hero, there'll be no catharsis. And there's no catharsis, so the purpose of a tragedy will not be fulfilled. So let's discuss the characteristic of a tragic hero. So these are the characteristics of a tragic hero. That a tragic hero, there should be goodness in a tragic hero. And a tragic hero must be appropriate, or there should be appropriateness in a tragic hero. And there should be likeness in a tragic hero. And there should be consistency in a tragic hero. So we will discuss these all features along with some others in detail one by one on coming slides. Moreover, the hero should neither be completely depraved nor completely perfect man, but intermediate between the two. So the hero, वो मुकम्मल तौर पर बहुत अच्छा भी नहीं होना चाहिए, बुरा भी नहीं होना चाहिए. He should be an intermediate one, having an error of judgment or hamartia in him. What is hamartia? Error of judgment. So you commit an error, okay, and you do not know the consequences of that error, that you will fall from a very prosperous situation, right, to a despair one. So the first one, goodness. What is goodness? The first quality of a tragic hero is goodness. The character is considered good whose words and actions reveal good purpose behind them. So there should be the purpose, whatever you are saying, so your purpose should be good, right? So यहाँ Aristotle का मतलब ये भी है कि an entirely bad person has no place in tragedy. क्योंकि वो अगर entirely bad होगा तो then the audience cannot identify themselves with a tragic hero. And if the audience cannot identify themselves with a tragic hero, there'll be no pity and fear. And if there is no pity and fear, there'll be no catharsis. And there is no catharsis, the purpose of a tragedy cannot be fulfilled. So there should be goodness in a tragic hero, and the character is considered good whose words and actions reveal good purpose behind them. Whatever they are saying, so there should be a good purpose behind the utterance of
that character. The second characteristic or a feature of a tragic hero is appropriateness. There are several interpretations of the word appropriateness. Like some critics have interpreted it differently. Some critics believe that it means true to type. Now, what does it mean by true to type? टाइप होता है कि एक जो कैरेक्टर होता है वो अपने तमाम टाइप को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। मतलब कि फॉर एग्जांपल एक किंग होता है तो वो किंग की तरह बिहेव करेगा, या जितने भी किंग्स होंगे उस टाइम के मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ स्टेट्स में, तो उस तरह बिहेव करना चाहिए उसको, राइट। या अगर एक डॉक्टर है तो उसकी सारे जो फीचर्स है, बिहेवियर है, वो डॉक्टर की तरह होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ट्रू to type. However, Aristotle does not mean that character should be type only. Okay? But also individual. Like एक character जो है ना वो एक टाइप को भी रिप्रेजेंट करेगा। एक प्रिंस होता है, एक विलन होता है, तो वो सारे विलन को भी रिप्रेजेंट करेगा और साथ साथ उसकी अपनी इंडिविजुअल फीचर्स भी होंगी, right? But what Aristotle means, okay, this is the most appropriate version of appropriateness, that characteristics of characters should be true to their particular age. जिस एज में होता है उस तरह बिहेव करना चाहिए, जिस प्रोफेशन में होगा उस तरह बिहेव करना चाहिए, क्लास, सेक्स और स्टेटस। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि ब्रेवरी would not be appropriate in a woman. This is okay what he says, character should be appropriateness. कि अगर आप जो है ना एक औरत को दिखाते हैं और वो ब्रेव होती है, so then this would not be, this feature is not like the feature of a tragic hero. आप औरत को जो है ना tragic hero नहीं दिखा सकते, simply he means. या आप जो है ना ब्रेवरी जो है ना वो औरत के किरदार में नहीं डाल सकते, क्योंकि उस ज़माने में औरत को बहुत जो है ना क्या कि इन्फीरियर समझा जाता था कि उसमें ब्रेवरी नहीं होती। इन द सेम वे ग्रेंजर विल नॉट बी अप्रोप्रिएट इन स्लेव। आप स्लेव को इस तरह नहीं रिप्रेजेंट कर सकते कि वो ग्रेंजर हो। सो दिस इज ओके व्हाट ही मीन्स बाय अप्रोप्रिएटनेस। The third feature, that is likeness to human nature. एक ट्रेजिक हीरो को उसी तरह बिहेव करना चाहिए जो एक ह्यूमन नेचर होती है। अक्सर औक़ात आजकल हम मूवीज़ में देखते हैं कि बच्चा होता है और उसके हाथ में वेपन भी नहीं होता, कोई तलवार भी नहीं होता, और वो 10-15 लोगों को मारता है। So that is not likeness to human being or human nature. या अक्सर औक़ात हम मूवी में देखते हैं कि एक बंदा जो है ना वो जहाज़ से छलांग लगाता है और फिर वो रोड पर आता है, फिर वो दौड़ता है। So this is not like true to life. Likeness to human nature means that a character should be true to life. जिस तरह ज़िंदगी में एक किरदार जो है ना वो कुछ करता है, उसी तरह ट्रेजेडी में भी करना चाहिए। हम अक्सर औक़ात देखते हैं आजकल ये मॉडर्न ड्रामाज में, मूवीज़ में, हॉलीवुड, बॉलीवुड में, कि एक बंदे के पास पिस्टल होता है, वो 100 बंदों को मारता है, 150 बंदों को मारता है, और वो खुद उस पर एक खराश भी नहीं आती। दैट्स नॉट ट्रू टू लाइफ। या अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि एक बंदा होता है, एक पूरा जो है ना टैंक उसके नीचे से गुजर जाता है और वो बच जाता है। हम कहते हैं कि बाइक को देखते हैं कि वो ट्रेलर के नीचे से गुजर जाता है, गाड़ी जो है ना वो उसको इस तरह जंप लगाते हैं कि वो जो कंटेनर होते हैं या बड़े बड़े व्हीकल्स उसके ऊपर चली जाती। सो दैट इज़ नॉट ट्रू टू लाइफ। इट मीन्स कि जिस तरह ज़िंदगी में जो पॉसिबिलिटी होती है एक बंदे के पोटेंशियल के, उसी पोटेंशियल को आप ट्रेजेडी में भी दिखाएं। So this is called likeness to human nature. So the third feature of a tragic hero is likeness. Aristotle does not define the word likeness clearly. Therefore, the word has also been given different interpretation. Right? So
इट वुड बी इंटरप्रेटेड एज लाइकनेस टू द ओरिजिनल वन। जिस तरह ओरिजिनल किरदार लाइफ में होता है ना, तो आप ट्रेजिक हीरो को भी स्टेज में उस तरह रिप्रेजेंट करें। इट विल बी सेम टू ओरिजिनल, राइट, हाउ ओरिजिनल इज। In this respect, the character would be true to the personage or history or legend. Such depiction will be a great hurdle in creative portrayal of character, right? So the more appropriate view could be that character should be true to life. जिस तरह life में होता है आप उसको वहाँ भी दिखाएं. For a tragic character to be true to life is important because only then we can identify with the tragic character. क्योंकि आप ट्रेजिक हीरो को इस तरह दिखाते हैं कि वो सुपर नेचुरल उसकी क्वालिटीज होती है, तो फिर तो पीटी और फिर अरोज नहीं होगा, लोग अपने आप को आइडेंटिफाई, क्योंकि फिर वो ऑडियंस की तरह नहीं होगा। ट्रू टू लाइफ इसलिए ज़रूरी है कि जब ऑडियंस जाते हैं वो ट्रेजिक हीरो को देखते हैं और वो उसमें अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, अपने आप को उसमें देखते हैं, वो कहते हैं तो हमारी तरह है। अगर आप ट्रेजिक हीरो को ऐसे दिखाते हैं कि वो जो है ना एक गन से 100 बंदों को मारता है, तो जो ऑडियंस वहाँ पर बैठा हुआ होता है वो तो कहे भाई ये तो हमारी तरह नहीं है, हम तो इस तरह नहीं कर सकते। सो ट्रू टू लाइफ मीन कि जिस तरह लाइफ में किरदार होता है तो वो आप उसको ट्रेजिक हीरो को भी उस तरह ही दिखाए, राइट। सो अगर वो ट्रू टू लाइफ होगा तब भी पीटी एंड फेरोज होगा, कैथारसिस होंगी और फिर जो है ना परगेशन। सो दिस आइडेंटिफिकेशंस causes to create emotion of pity and fear, and so the real purpose of the tragedy is fulfilled. If a tragic character is true to life, he will neither be good or bad, he will be a normal person, and so like it. So Aristotle also said that tragedy should imitate people better than रियल लाइफ। जो रियल लाइफ में होते तो आप उनको थोड़ा सा उनसे बेटर देखें। देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शंस इन सेइंग सो एंड इन सेइंग दैट द ट्रेजिक हीरो शुड ट्रू टू लाइफ, बिकॉज ट्रू टू लाइफ डज नॉट मीन एग्जैक्टली लाइफ लाइक। आप तो इस तरह नहीं कर सकते कि जिस तरह वो लाइफ में होता तो आप एग्जैक्टली उसको ट्रेजिडी में भी उस तरह दिखाएं। एग्जैक्टली उस तरह नहीं कर सकते, बट सेम उस तरह कर सकते हैं, राइट। इट ओनली मीन्स रिजेम्बलेंस विद रियल। Okay, resemblance real की तरह होनी चाहिए। The characters are better than life means that they should lead to a moral, active and full life. The unity and coherence in which we have in drama is not there in real life. क्योंकि रियल लाइफ में हमारे एक्शन में कोहेरेंस और कोहेजन नहीं होता, और ट्रेजिडी में हम जो है ना अननेसेसरी उससे सेक्शन निकालते हैं क्योंकि कोहेरेंस और कोहेजन क्रिएट करने के लिए। सो ट्रू टू लाइफ मीन कि वो रियल लाइफ की तरह होना चाहिए, सेम बट नॉट एग्जैक्टली कि जूं के तू आप उसको उस तरह रिप्रेजेंट कर ले, बेटर देन एवरेज लाइफ। सो अरिस्टोटल also says that tragedy should imitate people better than real life. There is no contradiction in saying so, and in saying that the tragic hero should be true to life, because true to life does not mean exactly lifelike. It only means resemblance with the real one. The characters are better than life mean they should lead a moral, active and full life. The unity and coherence which we have in drama is not there in real life. Already we talked about this. The third characteristic of a tragic hero, that is consistency. मतलब कि अगर आप ट्रेजिक हीरो को दिखाते हैं तो थ्रू द प्ले में वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर वो अच्छा है, अगर वो कूल माइंडेड है तो थ्रू द प्ले में उसको कूल माइंडेड दिखाए। अगर वो मतलब कि हार्श माइंडेड है तो थ्रू द प्ले में उसको हार्श माइंडेड दिखाए। तो ये कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी, राइट। So the fourth quality is being consistency. Consistency means that the character should behave uniformly from the beginning to the end. For example, he should not be rash now and cool-minded the next moment. If the dramatists want to show a character as inconsistent, so he should be shown consistently inconsistently. अगर ड्रामाटिस्ट उसको इनकंसिस्टेंट दिखाना चाह रहा है कैरेक्टर को, so he should be shown consistently inconsistent. It means that he should be inconsistent
inconsistently throughout the play. Fine. So the hero should be properly taken from one of the tragic uh, uh, houses of ancient Greece. So he should neither be a common man, a common man. He should be a king, prince, or aristocratic member. So this is another feature, that the hero should be properly taken from one of the great tragic houses of ancient Greece. A tragic hero should not be like a slave, not be a woman, not be a low casted person. He should be a king, a prince, or aristocratic member, because if the tragic hero is an aristocratic member, so there'll be more pity and fear. People will think, oh, if it can happen with the king, with the prince, or with the aristocratic class, it can also happen with us. Right? So there'll be like more catharsis if you're showing, you're taking character from ancient Greek, or a king, or prince, or aristocratic member. A tragic hero should not be perfectly good person. Why? A tragic hero should not be a perfectly good person. He should not be perfectly good. We cannot identify ourselves with a tragic hero. Then अगर वो मुकम्मल तौर पर एक अच्छा इंसान होता है, उसमें कोई फ्ला नहीं होता, और फिर जो है ना उसकी फाल होती है, फिर तो पीटी फेयर नहीं होगा. हम कहते हैं कि ये किस तरह हो सकता है, ये तो ह्यूमन नेचर के खिलाफ है, ये तो नाइंसाफ़ी हुई है, इसमें कोई फ्ला भी नहीं है, ये परफेक्टली गुड पर्सन है, फिर भी इनके साथ ये हुआ है, तो हम डाउट करेंगे द एग्जिस्टेंस ऑफ अ नेचर पर. सो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई आवर सेल्फ विद अ कंप्लीटली गुड पर्सन, राइट? So perfectly good character shock our sense of justice. It does not arouse pity. हम शॉक होंगे कि ये क्या हुआ, इसमें तो कोई फ्ला भी नहीं है, फिर भी ये फाल, इसकी फाल हुई है. So perfectly good character is not one whose calculation are always right. क्योंकि जब वो perfectly good होगा तो उसकी calculation all the time right होंगी. He does not commit any mistakes. So अगर वो गलती नहीं करेगा, उसकी calculation ठीक होंगी, और तो फिर वो जो है ना, he does not do anything wrong. अगर वो कोई गलत काम ही नहीं करता, उसकी मिस कैलकुलेशन नहीं होती, और वो कोई मिस्टेक नहीं करता, तो फिर वो सफ़र किस तरह होगा? तो फिर अगर वो सफ़र होगा तो हमारी पीटी एंड फिर अरोज नहीं होंगे. सो वी आर बाउंड टू बी शॉक्ड, ये क्या हुआ? द कैरेक्टर इज क्वाइट अनफिट फॉर ड्रामेटिक एक्शन एंड कॉन्ट्रास्ट. बर्नार्ड शॉ, in contrast, we can say Bernard Shaw and Eliot in recent times have made successful drama with Saint as tragic hero. उन्होंने सेंट्स को देखा है. सेंट तो perfectly good person होता है according to their tradition, Christian tradition, फिर भी वो कामयाब हुआ है. But we cannot blame Aristotle for saying that what he says, because he's talking about the tragic drama of his time in which there was no saint characters, were never heroes. उस टाइम तो सेंट करेक्टर हीरो नहीं होते थे, तो वो तो उस टाइम के हवाले से बात करता है. So looking at the modern drama having perfectly good characters are tragic, we can say that Aristotle is not totally correct in saying that perfectly good characters do not arouse pity. For example, Desdemona and Cordelia do arouse pity in us, though our senses of justice is also shocked. फिर भी वो हम में पीटी और फेयर अरोज करता है. ठीक है ना? सो हम ये कंक्लूड करते हैं कि मॉडर्न टाइम में शेक्सपियर के ड्रामों में या आजकल के ड्रामों में होता है. सो हम कह सकते हैं कि अरिस्टाटल जो है ना, वो मुकम्मल तौर पर सही नहीं था, क्योंकि शेक्सपियर के ड्रामा डिस्डेमोना को हम देख लें या कॉर्डेलिया को हम देख लें, तो वो तो पीटी और फेयर अरोज करते हैं, और फिर भी हम शौक नहीं होते. सो इट मीन्स ओके कि टाइम के साथ चेंजेस आ जाते हैं. Now, a tragic hero should not be completely bad person. और ट्रेजिक हीरो को मुकम्मल तौर पर बुरा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मुकम्मल तौर पर बुरा होगा तब तो हम कहते हैं कि अच्छा हुआ कि इनके साथ इस तरह हुआ, फिर भी पीटी फेयर नहीं होंगे, फिर भी जो है ना कैथारसिस नहीं होंगी, तो ट्रेजिडी का मकसद है वो पूरा नहीं होगा. सो कम्प्लीटली बैड हीरो आर नॉट फिट फॉर ड्रामेटिक एक्शन. द ऑर्डिनरी पीपल आर ऑफ इंटरमीडिएट सॉर्ट, राइट? हर इंसान गलती करता है, right? Intermediate sort. So they are neither good or nor bad.
In the case of perfectly bad man, we कैन नॉट आइडेंटिफाई आवर सेल्फ विद हिम. अगर आप ऑडियंस जाते हैं, थिएटर में बैठते हैं, वो कंप्लीटली बैड पर्सन को देखते हैं, तो वो तो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे. वो तो उस तरह नहीं हो, वो कहेंगे ही इज डिफरेंट फ्रॉम अस. क्योंकि दुनिया में कंप्लीटली बैड पर्सन है ही नहीं, दुनिया में कंप्लीटली गुड पर्सन है ही नहीं. ठीक है. सो दिस हीरो कैन नॉट अरोज एनी पीटी एंड फियर एंड द फॉल ऑफ मैन सेटिस्फाई. और फिर हम कहते हैं कि अच्छा हुआ कि इनके इस तरह हुआ है, क्योंकि ये डिजर्व करता है. तो अगर आप कहते हैं कि अच्छा हुआ कि इनके साथ इस तरह हुआ, ये डिजर्व करता है, तो फिर तो पीटी और फियर अरोज नहीं होगा, कैथारसिस नहीं होंगी. सो ट्रेजेडी का मकसद पूरा नहीं होगा. इट इज़ ऑल्सो क्वाइट annoying to see such a man from adversity to prosperity yet offend our senses of justice. Such thing is quite unacceptable in tragedy. Now, अगर हम looking at the modern drama को हम देख ले, it is also quite debatable that a perfectly depraved person is unfit to a tragic hero. मैकबेथ को अगर हम देख ले तो वो जो है ना एक हीरो था, उन्होंने breaks the law of hospitality किए थे, loyalty किया था, and he kills his guest and king and Duncans under his son of on roof. So though he is a depraved man, he arose over pity when he courageously draws his sword in the face of certain defeat. It was the genius of Shakespeare who could create such character of Macbeth. So आजकल के वक्त में हम देखते हैं कि ट्रेजिक हीरो वो कम्प्लीटली बैड भी होता है, तब भी वो पीटी और फेयर अरोज करते हैं. आपने एक मूवी देखी होंगी 1993 की है, शाहरुख खान की मूवी है डर. उसमें थ्रू द मूवी आप देखते हैं कि शाहरुख खान वो नेगेटिव होता है, लेकिन फिर जब उसकी मौत का टाइम आता है तो लोगों को फिर भी पीटी और फेयर अरोज होते हैं और उनके साथ हमदर्दी होती है. सो कभी कभी इस तरह होता है कि एक राइटर की ये जीनियस होती है कि वो कम्प्लीटली बैड पर्सन को भी इस तरह रिप्रेजेंट करता है कि पीटी और फेयर अरोज कर सकता है. सो द ट्रेजिक हीरो शुड नीदर बी कम्प्लीटली गुड और कम्प्लीटली बैड, बट ही शुड बी इंटरमीडिएट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन. अ ट्रेजिक हीरो शुड बी इंटरमीडिएट एंड बिटवीन perfectly good. Right? The tragic hero should neither be completely good or perfectly bad, but he should be an intermediate sort of person. A tragic hero should be intermediate and between perfectly good and bad, he should be like us, so that we can identify ourselves with him. He is, of course, more intense, having deeper feeling and higher powers of intellect, but is essentially human, so it is easy for us to see ourselves in him. He can commit mistakes, and one of such mistakes cause his downfall. Such as error is called Hamartia or tragic flaw. वो क्योंकि आम इंसान हमारी तरह है, तो वो इंटरमीडिएट होगा, तो वो एरर ऑफ जजमेंट होंगी, उसकी वजह से वो हमार्टिया का शिकार होगा, उसकी फॉल होंगी फ्रॉम प्रॉस्पेरस टू अ लोअर और डिस्पेयर कंडीशन. So the tragic hero should have hamartia, and it is important for tragic hero to have hamartia or error of judgment. Bradley has interpreted hamartia as a tragic flaw, but other like Lucas and Butcher say it is not a moral failing, but an error of judgment. It is not any kind of depravity. The fall of hero is caused by the error of judgment. So ये depraved नहीं होता, ये मिस कैलकुलेशन करता है, एरर ऑफ जजमेंट करता है, तो ये फॉल का शिकार हो जाता है. राइट. सो द 3 ways in which hamartia can cause the rise. hamartia जो है ना वो 3 मुख्तलिफ तरीके हैं जिसकी वजह से hamartia can cause rise. hamartia आ सकता है. Now the first cause is that it may be deprived from ignorance of circumstances. Hamartia, which is an error of judgment or miscalculation, can rise in 3 ways. Firstly, it may be deprived from ignorance of circumstances, right? Secondly, the error of judgment may rise from a hasty or careless view of given situation. Such case is illustrated by Othello. वो गुस्से में आता है और मारता है, ठीक है, अपनी बीवी को भी मारता है. Is a case of error was avoidably, but the hero did not avoid. Thirdly, the error may committed through thought, not deliberately. आप उसको इरादतन नहीं करते. This happen an act of anger
or passion, like King Lear commits such an error when he banishes Cordelia. So 3 तरीकों से हमार्टिया वो राइज होती है. एक, डिप्रूव फ्रॉम इग्नोरेंस ऑफ सर, आपको खबर नहीं होती हालात से और कुछ हो जाता है और आप मिस कैलकुलेट करते हैं. और देयर ऑफ जजमेंट में अराइज फ्रॉम द हेस्टी और केयरलेस व्यू ऑफ गिवन सिचुएशन. आप गुस्से में या जल्दबाजी में कोई काम करते हैं, आप एरर ऑफ जजमेंट करते हैं. और थर्ड, द एरर में कमिट दो नॉट डिलिबरेटली, आप इरादतन नहीं करते. दिस हैपन्स इन एन एक्ट ऑफ एंगर और पैशन. ठीक है. नाउ अब देखें ना, द हामार्टिया इन ईडिपस रेक्स इंक्लूड द हामार्टिया इन ईडिपस, पहले इसको डिस्कस करते हैं फिर कंक्लूजन आते हैं. द हामार्टिया इन ईडिपस रेक्स इंक्लूड्स 3 factors: the defeat of character, the defect of character, a passionate act, character में कुछ defect था Oedipus Rex में, and a passionate act, and ignorance, उसको नहीं पता कि उसने अपनी माँ से शादी की हुई है, उसकी इसी अपने बाप को कत्ल किया, माँ से शादी की हुई है. ठीक है. So the defect in his character is that he was very proud, and he would find out the person responsible for the play. मैं मालूम करूँगा कि इस जो उसका इलाका था थीब्स के यहाँ पर ये प्ले क्यों आया हुआ है, मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा. राइट. सो ये उसकी वो प्राउड था. The passionate act is the killing of a man in anger. उन्होंने जल्दबाजी में आदमी को भी मार दिया जो उसका बाप था. And ignorance that he does not know that he killed his father. उसको पता नहीं कि उसने अपने बाप को मारा है और अपने मदर से शादी की हुई. The tragic irony lies in the fact that the hero commit this error in blindness and right, without any evil intentions. उसके intention भी evil नहीं थे, but the result is disastrous. Such thing gave the exact opposite result of what was intended by the tragic hero. Right? In the connection, Butcher remarks Othello in the modern drama, Oedipus in ancient are the two most conspicuous example of ruin wrought by character. Noble indeed, but not without defect. Right? Acting in the dark as in seen for the best. So हम conclude करते हैं looking at the Greek tragedies. Aristotle concept of tragedy, tragic heroes, quite acceptable. He's right in saying that tragic heroes should not be perfectly good or bad, and that he should be appropriate, consistent, and true to life. However, after investigation in the modern drama, his vision seems limited. Bernard Shaw and Eliot have shown the perfectly good people like saints can also be effective tragic heroes, and they can also arouse pity and fear. Shakespeare has shown the villainous man like Othello can be tragic hero. Tragedy is caused by arouse of judgment. Okay, Hamartia. So this point is true of the modern tragedies too. जो हमें error of judgment होती है वो हमार्टिया को arise करती है. So the main limitation of Aristotle concept of tragedy is that it is based on Greek tragedy. However, we cannot blame Aristotle for it, because अगर आज Aristotle जिंदा होते तो वो कभी इस तरह नहीं करते कि कंप्लीटली गुड या कंप्लीटली बैड बंदा जो है ना वो ट्रेजिक हीरो नहीं बन सकता. अगर अरिस्टोटल जो है ना वो शेक्सपियर के ड्रामे पढ़ता तो वो कंसेप्ट ऑफ ट्रेजिडी को भी वो चेंज करते, क्योंकि उन्होंने तो ग्रीक के ड्रामे, ग्रीक के प्ले पढ़े थे. उन्होंने कहीं सोफोक्लिस, यूरिपिडीज को पढ़ा था, उन्होंने शेक्सपियर या बर्नार्ड शॉ को नहीं पढ़ा था. So thank you so much. It was all about the concept of tragic hero given by Aristotle. See you next lecture. Thank you so much.